The distance of a far off point on the equatorial plane of an electric dipole is halved. How will the electric field be affected for the dipole? So the problem is based on the topic electric dipole and the corresponding field to it. So in the equatorial plane, suppose this is the dipole having the negative as well as positive charge. So on the equatorial plane, there is any point, for example point P, then the electric field is given by the formula E equals to minus P upon 4 pi epsilon naught r square plus a square to the whole power 3 by 2. Now here 2a is the length of the dipole. So from a midpoint, the distance of any charge is a, and the point is located at a distance of r from the midpoint at the perpendicular bisector line. So this is the formula for a short dipole. For a short dipole or for a far off point, this a can be neglected as compared to r. So we can say that r is very greater than a. Then we can certainly say that r square is very greater than a square, and we can neglect this a square here. So the electric field becomes this becomes minus p upon 4 pi epsilon naught r to the power 3. So this is the formula of the electric field in the equatorial position corresponding to a dipole. The electric field is given by this formula. So we can say that the electric field is inversely related to the power of 3 of the distance from the midpoint. So if the distance is halved, for example, in the first case, the electric field is E1. So for E1, the field is minus P upon 4 pi epsilon naught RQ, and for the second case, E2 is equal to minus P upon 4 pi epsilon naught R upon 2 to the power 3. So this becomes minus 8 times P upon 4 pi epsilon naught R cube, and this thing is E1 minus this thing is minus P upon 4 pi epsilon naught R cube is E1. So we can say that this is 8 times E1, or in another words we can say that the electric field becomes 8 times of this of its earlier value. So answer is 8 times. Answer is answer is 8 times. The electric field increases 8 times. So इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि कोई एक पर्टिकुलर डाइपोल के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल प्लेन में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक सर्टेन दूरी पर वो पॉइंट है। हमसे पूछा गया है कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस अगर ये r है और r की बजाय इसे r/2 कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के मुकाबले कितने टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो है माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल या फार ऑफ पॉइंट की हम बात करते हैं तो इस ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर, और हमारा जो फॉर्मूला जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बन के आता है वो आता है ई इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर डिस्टेंस r है तो हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट करेंगे, और सेकंड केस में r की जगह हम r/2 पुट कर देंगे। r/2 का जब हम होल क्यूब करेंगे तो वो आएगा r क्यूब अपॉन 8। 8 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और न्यूमरेटर में माइनस 8p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होगा, और जो आप ये टर्म देख रहे हैं माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये इस फर्स्ट इक्वेशन से E1 के बराबर है, तो इसकी जगह हम E1 पुट कर देंगे। सो E2 की वैल्यू हो जाएगी 8 टाइम्स E1, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अर्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड का 8 टाइम्स हो जाएगा। सो 8 टाइम्स इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।